and then trained as a patent attorney, and his profession is now as a patent attorney. He is the alumni of DePaul University, as already told that. He has done his PhD doctorate thesis in intellectual property issues in agriculture biotechnology with special emphasis on patenting. And from his PhD thesis, it is very rare that he has 2 patents and 3 publications from his PhD work itself. After getting a PhD, he holds a degree from prestigious training college, law college, and has been trained by senior advocates like N.K. Sheth from here. He gains experience from general, civil law and contract, and civil litigation on original and appellant sides. He was trained under 2 prominent US-based attorneys during the course of his engagement with US law firms and US outsourcing venture at Sony. He has been a trademark and copyright attorney for both individual and body corporate entities, and has successfully led the branding campaign initiative through effective trademark and copyright registration before the registry. He has been the IP counselor for TALI for last 10 years and has been responsible for patenting of their more than 50 innovations, inventions, technologies. The patent drafting and prosecution experience of Dr. Rajesh is in agriculture and related technologies, energy and environmental sector, pharmaceutical and biotechnology, instrumental and mechanical interventions, electricity and rural power grid optimization and technologies. He has been connected with delivering opinion to Government of India, ICR, MBRA for time to time related to various issues of the patent. He has been the counsel for OTBL and special IT attorney for 2 prominent institutes in ISAR. He is currently involved in tendering advice as a panelist expert of IP with Global Agri. He is also involved with 3 prominent patent product development under by the NRCC, National Center on Camel, Bikaner. He is also advising Rajasthan Agriculture University, Bikaner, on developing their patent and portfolio. A brief formulation of area-wide system technologies where Dr. Rajesh is currently working in biotechnology like modulation, gene expression, producing hybrid plant by crossing, transgenic plants and expressing recombinant traits. Food biotechnology, nutritional products for growth enhancement, strengthening of immune system, microbiology, like kits for detection of adulteration in milk samples, etc., and other related biosensor sector, microbial consortia, biofueling, environmental sector also. He has been advising law counsel for TALI for last 10 years and has been responsible for the regular grading of contracts, employee agreements, collaboration agreement, material transfer agreement, technology and know-how, sharing agreements and contract agreements related to smooth conducting of the various summits of TALI as well as TALI University. He has also been entrusted with generation of IP policy of TALI in accordance with the modern day of IP and developing a process of protocol for SOP, patent and technology for TALI. He has been in help for leading the technology transfer legal application in the field of biopesticides for TALI in both Indian and offshore foreign jurisdiction. In addition to this, Dr. Rajesh has the privilege and distinction to assist Honorable late Mr. Justice Valmiki Mehta in 2 prominent High Court litigations in a patent dispute involving 2 purification gates in India. Besides that, Rajesh is also involved in general litigation area of service law, consumer interest, environmental law before High Court and other judicial forms. So I now welcome Dr. Rajesh to deliver his talk on his topic. Sir, please. Sir, Hello.
Good afternoon, Dr. Mohanty, the Honorable Director. Good afternoon, faculty members, and a most ardent good afternoon to the audience sitting behind the first row. Because it is this audience which carries a ray of hope for us Indians in the future. फ्रंट रो में बैठे वाले और डाइस पे खड़े होकर बोलने वाले हम लोग जितने लोग थे, we have already lived our prime. The future lies first रो के पीछे, correct? And उस रो में भी जो है कैटेगराइजेशन ये है, the backbenchers, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है, the backbenchers they have been the innovators and number one achievers. क्योंकि सबसे ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वो ही सोचते हैं, बाकी सब लोग नॉर्मल सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले backbenchers ही होते हैं. And this great country in itself gives an example. 3 backbenchers sitting in parliament, all of them became prime ministers, और front benchers आज भी king maker की भूमिका निभाते हैं बस. I don't think I have to take their names. 3 prime ministers, Atal ji, Narasimha Rao ji, and the hawkish prime minister of India, late Mr. Chandrasekhar. वो सब backbenchers थे in parliament. तो इसलिए backbenchers से मैं ज़्यादा inspire होता हूँ, and I make it a point to see that they deserve a special mention in whichever lecture series that I deliver. In fact, I humbly regret that I use the word lecture series, but I have to primarily use it because of the age difference between my audience and me. Otherwise, this is not a lecture series. It is simply an interaction, and it will be conducted in this manner only. जो मेरे को समय 1 घंटे का organizing committee में दिया है, it will be in the form of a bilingual interaction, and as part of thinking out of the box, at the end of that 1 hour time frame, I'll see that इस audience में 2 groups जो है वो एक exercise भी simultaneously मेरे साथ conduct कर सके. Fine. So this is in general what I do. I'm thankful, it's gracious of both Dr. Verma and Dr. Sumit Mahajan that they have spoken so highly of me. But in essence, I'm a simple individual. मैं एक छोटा सा trust चलाता हूँ, whose primary target is through innovation see to it that we are able to deliver something for this great nation. That is the only objective. Onvatnyas Foundation, that is the name of the foundation which I head. And primary focus uska hota hai for developing technologies from waste to wealth, first and foremost. And lastly, ensure कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सर्टिफिकेट बन करके मेरे कैबिन में एज अ प्राइज ना टंगे. It should see the light of the day in terms of commercialization. That is, उसका conversion होना चाहिए. That is the ultimate objective. And आज के इस interaction में इस audience में से अगर 1% भी जो है वो जनता निकल करके जो है कुछ कॉमर्शियलाइजेबल टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी को देती है, तो एज डॉक्टर वर्मा हैड आल्सो राइटली सेड द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is a general information.
basic IP categorization, we have already had the chance and honor to listen to two speakers earlier in the first half. I'll just touch upon them. For the simple reason that maybe three speakers, if they are present, all of them, they represent a different mindset and a different viewpoint. At the top of it, there's patent, designs, trademark, copyright, trade secret, geographical indications. But we'll start in the reverse order. GIs, they are specific to a specific geographical domain. They have a lot of honor and indigenization associated with them. But the commercialization potential is negligible. GI के जो है वो prominent examples, Darjeeling tea is one, Dalmia tea from Ceylon. India के कोई और examples? Very quickly from the audience. I do not know. बताइए. बासमती राइस. आगरा पेटा registered है या नहीं? I don't know. Registered. Yes. अगर registered है तो answer is yes. बनारसी साड़ी registered है? Yes. तो उसका answer yes है. मीठे का कौन शौकीन है? पेड़ा कौन खाता है? Other than Mathura, there is a place in Haryana, Hansi, HANSI. Incidentally, वो मथुरा पेड़ा से पहले का GI registration उनका है. A very small place. So basically, it depends on the awareness. How a prominent place like Mathura could not view it in terms of time, and a small place like Hansi could do it. This is a question which is to be answered by all of us. Trade secrets. Simple. Trade secrets are totally restricted. Trade secrets का मतलब ये होता है that we store our knowledge and we pass it on only to our generation. So, in my opinion, this is one area which deserves not to be in this list. And the government probably at some point of time, the members of parliament, they enact an act to exclude trade secret out of the intellectual property. Because इससे ज़्यादा selfish approach किसी intellectual property में नहीं है. 300 साल से in a place like Lucknow, 300 साल से there is a composition जिससे minced meat kebab बनते हैं, टुंडे कबाबी, and till date nobody knows, but for 300 years generations it is being passed. Supposing उसका patent हुआ होता या patentable track पर होता, after 20 years it would have been freely available to all the cooks और जितने खानसामे हैं to reproduce it, replicate it and contribute to the national economy. This brings me to something which Dr. Verma had touched short while back and I had countered it. ये भी एक objective होता है patenting का. इसलिए patenting is significant as a driver of economy in any developing nation. उसके ऊपर आई copyrights पर. Copyrights, well, yes, ठीक है. Copyrights, it is an intellectual property. Commercialization potential भी उसका है. We move to trademarks. Trademarks, again, basic knowledge आप सबको है. It has been touched earlier on. I'll not go into it. I'll go into just a specific part of it. How many of us know the symbol T? Simple T. कितने लोग जानते हैं? I assume सब जानते हैं. The crucial question is how it is related to intellectual property. ये कौन जानता है? And the basis for it. Tata Motors, उसका साइन क्या है? T है ना? Right? How many of you have seen the Mercedes symbol? Mercedes symbol क्या है? M है क्या? नहीं. That is also a T. T with its arms spread at an angle of 120 degrees each. How is it possible that both of them they own a trademark of the same symbol T?
This is डिजाइन नहीं, आप ट्रेडमार्क की बात कर रही है, डिजाइन भूल जाइए, अभी वी आर ऑन ट्रेडमार्क ओनली. Why? That why if we make an attempt to understand, almost everyone who is able to understand will be successfully able to decode the entire dynamics of economic warfare associated with IP. इसके इन दो एग्जांपल के आगे एक और चलते हैं, टी का एक और सिंबल. Who is familiar with Japan? टोयोटा. टोयोटा का सिंबल क्या है? वो भी टी है. So exert pressure on your brain and try to think that why the same T to three corporate giants that is issued and that is recognized. इसका आंसर हम लोग लास्ट के 5 मिनट में उस पर बात करेंगे. Next is designs. Designs is for or any ornamental changes aesthetic value. Again it comes later. Then at the top of the list आता है patents. Now first of all why do we need patents? एक छोटा सा जो है वो reference, passing reference I'd like to make. ये I have to simply do it because as scientist I also come from a scientific and research background. As scientists हम लोगों के DNA में ये inculcate कर दिया जाता है that अभी तक जो चला आ रहा है, morning में भी वो touched upon क्या था डॉक्टर साहब, publish और perish, publish और perish इस तरह का कुछ था ना. I would say take it the other way around. It is not publish or perish. It should be publish and perish. Patent and thrive. There is a difference between using and there is a difference between using or. Publish or perish. इसका एग्जाम्पल और इसका खामियाजा ये कंट्री पिछले 250 साल से वो झेल चुकी है. In the British times onwards, when the British arrived after 1757 Battle of Plassey, उसके बाद से publish और perish का ही अप्रोच चल रहा था. In a colony like India, उनके अपने डोमिनियन में it was patent from that time only, from 1400 something, जब किंग जॉन का कार्टर आया था. Why? This question needs to be answered by no other person except ourselves. उसका simple reason ये है, publication हमको limelight दे देगा, हमें स्टेज पे बुला के माला पहना देगा, public recognition दे देगा, but it will not give me the enough breathing space in terms of resource which I can utilize for doing further research. Post-independent India, this was the objective of the Patents Act 1970, that the public intent is, why patent? To answer the question, we need a patent for the simple reason that patent, in addition to the name and fame, वो आपको resource monetization देता है. Along with that, it meets the overall objective that it gives the inventor further motivation to contribute more such innovations towards the society. No other intellectual property gives you monetization in addition to recognition. Recognition के लिए क्या है? Recognition के लिए तो जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो अमेरिका बिल्कुल दूर दराज जो है एग्जिस्टेंस में पड़ा हुआ था, उसको जो ढूंढ लिया. That is why it was a discovery. So discovery and invention, this is a prominent difference. We get monetized or we gain commercial mileage only from the patents. This is basically just for a matter of interpretation. Monopolistic grant in favor of an individual. Why it is granted? These are the questions. I have briefly touched upon them. These questions are primarily meant that समय-समय पर
even after going out of this hall, whatever you do in life, you keep asking them if you are associated with science and technology. इनको रेगुलरली आप आंसर करते रहेंगे तो the understanding is that आप रास्ते से जो है वो दाएं बाएं नहीं होंगे. Now, the key ingredients concept होता है, आइडिया होता है, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होता है, नेसेसरी रिक्विजिट होते हैं. ये हम लोग सब लोग पढ़ लेते हैं. जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पीकर आएगा वो भी आपको यही बता देगा, वो फ्रेश हो जाता है. जो लॉ फॉर्म से आएंगे स्पीकर वो भी आपको इतना बता देंगे. क्रूशियल थिंग्स आर द फर्दर पॉइंट्स जो उसके साथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और राइडर्स एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है. सो फॉर अ पेटेंट व्हाट वी नीड इज नोवेल्टी. नोवेल्टी का मतलब क्या है? न्यूनेस. हिंदी में क्या हुआ? वो साइड कुछ नहीं बोल रही है. ओके. ये कोई भी चीज नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? पहले कभी देखा नहीं, दैट इज वन. या पहले कभी सुना नहीं, व्हाट एल्स? या बोथ ऑफ देम? एग्रीड? नॉन ऑब्वियसनेस क्या होता है? नॉन ऑब्वियस किसको कहते हैं? लेट्स स्टार्ट विद सिंपल डिक्शनरी टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज नॉन ऑब्वियस? नहीं, कॉमन तो सब कुछ है. अनकॉमन हुआ समथिंग विच इज नॉट ऑब्वियस. अगर वो कॉमन ही होगा तो वो पेटेंटेबिलिटी के दायरे में आएगा ही नहीं. इट हैज टू बी नॉन ऑब्वियस. लास्टली इज कॉमर्शियल वायबिलिटी. कॉमर्शियल वायबिलिटी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो यू विल नॉट बी ग्रांटेड अ पेटेंट. फॉरगेट इंडिया, इन एनी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. तो ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं. नाउ ये जो डिमार्केटिंग लाइन है जहां ये रिकॉर्डिंग स्टैंड लगा हुआ है, लेट्स कीप दिस साइड एज टीम ए एंड लेट्स कीप दिस साइड एज टीम जेड. ठीक है. एक क्लासिक एग्जांपल, एक बैंक की रिक्वायरमेंट है, माई मनी एंड माई ज्वेलरी शुड रिमेन सेफ. तो वो जो है एक रिक्विजिशन टेंडर फ्लोट करते हैं कि हमें एक जो है वो सेफ बना करके दो. ठीक है. ये गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है. देयर आफ्टर क्या होता है इस पे? अब आप लोग दोनों लोग ये बताइए, दोनों साइड, इसका एप्लीकेशन भी है, कॉमर्शियल वायबिलिटी भी है, नोवेल्टी भी है एंड नॉन ऑब्वियसनेस भी है. तो हमें पेटेंट मिलना चाहिए. यस और नो? हाउ मेनी यस एंड हाउ मेनी नो? ये साइड क्या कहती है? टीम ए yes or no? Why no? It is novel, we have not heard of it, it is non-obvious and it has commercial viability. 50 बैंकों को रोजगार मिलेगा उससे ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रोजगार मिलेगा, सुनारों के हैं, गोल्डस्मिथ के हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट होगी. इतना तो कमर्शियल पोटेंशियल है. आप लोग क्या कहते हैं? See, again I said apply your minds. Don't be thinking like a stenographer. अगर नो है तो क्यों है? Anyone very quickly? डिजाइन छोड़ो, तो बेसिक की बात करो. फॉरगेट डिजाइन और उसके लिए तो एकेडमिक लेक्चर होते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई एम ट्राइंग टू पास ऑन सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस व्हिच यू कैन यूटिलाइज इन एवरीडे लाइफ. व्हाई? नो क्यों? हाँ होना चाहिए. नोवेल्टी है, नॉन ऑब्वियसनेस है, कमर्शियल वायबिलिटी है. व्हाट डू यू से? आप लोग क्या कहते हैं? यस. यस. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर. कौन किसका यस है? प्लीज गिव मी वन रीजन फॉर इट. इधर से यस आया.
Sir, tell me, your answer is crucial for our success, for this nation's success. Why yes? I am happy to hear that there are dissenting voices, but उस dissent का reason तो होना चाहिए. Please tell me. और no वालों का क्या reason है? इसका 20th आज की डेट में पेटेंट होगा या नहीं ये बताओ. प्रॉब्लम इज दिस. उस पेटेंट की इंफॉर्मेशन तो गेस्ट वालों को पहले देनी पड़ेगी मुझे. क्यों देनी पड़ेगी? अगर मैं कोई स्टेट बनाता हूँ तो मुझे उसको वो एक्सेस कर सके उसे बारे में बताना पड़ेगा उसमें क्या सिस्टम है ताकि वो मुझ पे यकीन करें. तो उससे तो मैंने पहले ही अपनी वो डिस्क्लोज कर दी जो उसके अंदर सीक्रेट है. ऐसा नहीं होता. उसको कवर करने के सब रास्ते होते हैं which are called NDAs, the non disclosure agreements and the confidentiality agreements. So वो आपको जो है कन्वेंशनल सरकारी पेटेंट ऑफिस वाला आदमी बता देगा, लॉयर बता देगा, लॉ फर्म वाला. रियल टाइम में क्या होता है, हाउ इट इज नेगोशिएटेड, लेट्स फोकस ऑन दैट. टीम A has simply said no, but they are unable to offer any plausible reason for it. Yes, please. सर आइडिया और कॉन्सेप्ट इनोवेशन क्या हुआ? ना तो कोई इनोवेशन है और आइडिया की ब्लॉक पहले से अवेलेबल. ये तो तुम लॉ की बात कर रहे हो, वो तो बाद में इंटरप्रेट होगा. अभी ये बताओ पेटेंटेबल है कि नहीं है. सर आपके उसमें लिखा हुआ था पहला. हमारा वो छोड़ दो. That is a lecture. I said this is practical real time example. उसको भूल जाओ, अपना दिमाग में लो. ओके, सो जिन्होंने नो कहा वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो करेक्ट थे, but they will be thrown out of the court because they don't have a reasoning for it. वो अपना केस प्लीड ही नहीं कर पाएंगे. जिन्होंने यस कहा they were slightly on the wrong foot, but yes, because they displayed the ability to dissent, तो शायद थोड़े बहुत knowledge inputs के साथ they will be able to perform better. Now the answer to this question, no है तो क्यों no है? Simple reason इसका no का ये है, novelty है, नया है, ऐसा सेफ जो तोड़ा ना जा सके, ऐसा सेफ जिसमें मैकेनिज्म अलग हो. नोवेल्टी भी है, न्यूनेस भी है, कॉमर्शियल वायबिलिटी भी है, नॉन ऑब्वियसनेस भी है. बट व्हाई अ पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड? एंड फॉरगेट इंडिया, इट विल नॉट बी ग्रांटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर एनी मैकेनिज्म व्हिच कैन ब्रेक ओपन दैट सेफ. वो चोर के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा. आंसर इज it is against public morality. Even if my invention is novel, non-obvious and commercially viable, if it is against public purpose and public morality, it will not be granted a patent. So the key takeaway from here is that सब लोग जो है स्टेनोग्राफर की तरह मत सोचिए. Apply your mind, and law is what? Rational and logic. इन दो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते रहिए. आपको किसी अटॉर्नी की जरूरत नहीं है, आपको किसी जो है एडवाइजर की जरूरत नहीं है. आप खुद अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं. एंड द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ today's lecture series of mine is that I am able to pass on that confidence ability to build up your own case. ठीक है? Now we move on to the next area. ये सब भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में देख चुके हैं. It is just for information. My mail and my presentation, it is there with the department. आप लोग इसको लेके कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं. This also has been discussed. Now, the key generalizations which matter to us, which are more important. Patents, they are a tool for asset creation.
और जब कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है उसमें जो है कैपिटल इनपुट लग रहा है, दैट इज अनदर मैटर, दैट वेदर इट इज अ हार्डकोर मनी इनपुट और मटेरियल इनपुट और एन इंटेलेक्चुअल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, बट एन एसेट इज बीइंग क्रिएटेड। आज के कंटेक्स्ट में आज के कंटेक्स्ट में बनाया है दैट इज 20 year ending 23, 71% of the Microsoft's resources they come from licensing of software patents। एक और जो आप लोगों का नॉलेज गैप है, सॉफ्टवेयर पेटेंट्स। इंडियन एक्ट सेज कि सॉफ्टवेयर का पेटेंट नहीं होता, बाकी वर्ल्ड में सब जगह सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल है, तो इंडिया में जो है वो हाउ इट विल बी रोप्ड इनटू द पेटेंट मार्केट? द आंसर इज गिवन इन द एक्ट itself, which unfortunately is not touched upon by people. Any application of the software in combination with hardware, that is patentable. It may not be mentioned in the act, but that has been affirmed by the Supreme Court, the apex court of the country. This is what is called learning from the precedences. थ्योरी में सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल है या नहीं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप ये पढ़िए, ये जानने की कोशिश करिए that precedent से जो लॉ का एवोल्यूशन हो रहा है, how does it bring software into the Indian market? This is an exercise for you for long term perspective. ठीक है। Thereafter, inventor's approach to life, it cannot be compartmentalized in the form of कि आपने ये किया हम आपको इतना पैसा देंगे, वो नहीं। Inventor has his or her own norms, own rules and own regulations, और अगर वो उन rules regulations को खुद नहीं बना पा रहा है, तो that means he is not a true inventor, he is a pseudo inventor. He is trying to put himself into the category of inventors, whereas he is not. ये भी एक हकीकत है that जो सबसे ज्यादा डिसग्रंटल्ड वर्कर होगा, सबसे ज्यादा डिसग्रंटल्ड और डिससैटिस्फाइड साइंटिस्ट होगा, और सबसे ज्यादा जो है वो रिसर्च में रेड टेपिज्म के दायरे में स्क्वीज साइंटिस्ट होगा। He will be amongst the top innovators and inventors. History has proved this time and again. Educational failures, they make good innovators. This implies a key concept of patenting. If we are not able to reach a desired output by one route, we are forced to think of reaching it by n number of different routes. Those n number of different routes, they act as novelty planks. Only thing is that our mind should be open to read them and to access them. Now we come to case histories. These case histories, they will just give you an insight of how the segments in the patent and tech transfer run. There is this water purifier story. Water purifier किसने देखा है? Almost all of us. हमसे पहले और किसने देखा है? Our fathers, forefathers. Yes or no? और उसके पहले किसने देखा है? You would be surprised to know that this has been seen by our ancestors more than lakhs and lakhs of years old. How? जो ancient water purification होता था, in the ancient period,
The living settlements used to be beside the river. एक सिंपल प्रोसेस डिप्लॉय होता था कि रिवर से पास में जो है वो आपको पानी आपने दिया, कंटेनर में जो है वो रख दिया, बेसिक सेडिमेंटेशन हुआ, पार्टिकुलेट इंप्योरिटी सेटल डाउन हो गई, एंड इट इज दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. एवोल्यूशन प्रोसीड्स, सिविलाइजेशन आगे चलता है, डिस्टेंस फ्रॉम रिवर टू द ड्वेलिंग यूनिट्स बढ़ता जाता है, तब जरूरत पड़ती है वाटर को स्टोर करने की. At the same time, populations also keep increasing. The water purity gets compromised. तब हमारे ancient forefathers क्या करते हैं? In addition to sedimentation, they use bath, tree baths, perforated. Here filtration comes into picture. ठीक है? उससे और आगे चलते हुए आइए 1970 में घर में क्या होता था? 1970s में नथिंग, मटका होता था या बकेट, उसमें रख दिया. 1990 के सीन पे आइए. व्हाट वाज द वाटर प्यूरिफायर? एक सिंपल स्टील कंटेनर, उसके ऊपर एक एडिशनल कंटेनर, डिलेड परकोलेशन ऑफ वाटर, बीच में एक सिंपल कैंडल लगा हुआ है. दैट वाज आल्सो अ वाटर प्यूरिफायर. कम टू ईयर 2010. 2010 में क्या हुआ? इसमें 4 कैंडल है. इसमें हमने मसलिन क्लॉथ फैब्रिक लगाया हुआ है टू रिड्यूस पार्टिकुलेट इंप्योरिटी. दैट वाज आल्सो वाटर प्यूरिफायर. इसके बाद इट वाज नोटिस्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अगर जो हम लोगों को लॉ स्कूल में या जो हम लोगों को लोग पढ़ाते आए हैं एक्सपर्ट्स इस फील्ड के पेटेंट में नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए, उस फील्ड का नहीं होना चाहिए. इफ दैट वाज द रीजन, 1 लाख साल से ऊपर से जो है वाटर प्यूरिफिकेशन चल रहा है, तो व्हाई वाज इट के 1990 ऑनवर्ड्स, 1990 में भी हमको पेटेंट वाटर प्यूरिफायर पे मिल रहे थे, 2010 में भी मिल रहे थे और आज भी मिल रहे हैं. व्हाई? Simple is that intellectual input has been used smartly by your attorney or by the scientist himself. How? इस पूरे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में particulate impurities पे फोकस था. If I am able to kill the microbes or bring microbicidal action by incorporating UV rays, that ensures that a novelty which cannot be defeated that was there, and again numerous patents were granted and are being granted today also. यह है evolution cycle water purifier का. ये आप लोगों के वो क्वेश्चन आंसर करता है that how novelty is created. अगर novelty नहीं है and if the patent office or the authority puts up कि नहीं ये तो novel है नहीं, तो सब जानते हैं, our mind should be able to think and interpret how to present a logic and how to present an interpretation that it is converted into novelty. ये पोजीशन है 2020 तक. आज की डेट में if there is some rival researcher who is smarter or some attorney who is smarter than the rest, वो ये इंश्योर कर लेगा कि प्रेजेंट डे वाटर प्यूरिफायर पेटेंट्स जो हैं, आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू लखनऊ, मैं रास्ते में उसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता हूं. दैट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आई विल स्टिल गेट अ पेटेंट फॉर इट एंड आई विल एज आउट द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. हाउ? I have incorporated IoT, the Internet of Things, in line for achieving a common objective with different results. So please try to spot these novel implications, how to interpret novelty, how to interpret non-obviousness, and last but not least, अगर आपका टेक्निकली सुपीरियर प्रोजेक्ट है तभी उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी. एंड यू विल बी एबल टू गेन माइलेज ओनली आफ्टर you edge out the others. See what's in today's time, patent you need it for the simple purpose. If you don't shoot to kill, the other person will do that for you. So you have to keep thinking, keep innovating. आप नहीं करेंगे तो आप एज आउट हो जाएंगे. एंड हम लोग 200-250 साल से बहुत एज आउट होते रहे हैं. हमारे ब्रिटिश ओनर्स जो थे, ब्रिटिश रूलर्स, वो
पब्लिशिंग का वो हम लोगों को समझाते रहे एंड उनकी अपनी कंट्री जो है पेटेंटिंग के रास्ते पे चलती रही एंड द डिफरेंस, वो खामियाजा, वो प्राइस, वो हम लोग आज तक पे कर रहे हैं। सो पेटेंट एंड थ्राइव, दैट हैज टू बी द अप्रोच। पब्लिश करोगे तो पेरिश करोगे ही करोगे, दैट इज द foregone conclusion. How many of you have heard oil zapper? माइक्रोब कौन जानता है? What are microbes? I guess इस ऑडियंस में सब साइंस एंड टेक के स्टूडेंट हैं। माइक्रोब, who all is familiar? Can microbes का यूज क्या पेट्रोलियम सेक्टर में हो सकता है? अगर हो सकता है तो why, if it is such a general thing, then it should have been done more than 100 years back. Why did we have to wait till year 2005 or 2006 for development of this technology? जब ऑयल बोरिंग करते हैं, अर्थ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड पेट्रोलियम जब ऊपर सरफेस तक आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट सॉलिडिफाइज द बोरवेल, वैक्सेस जिसको कहते हैं पेट्रोलियम वैक्सेस। अब जब पेट्रोलियम वैक्सेस जो है वो उसको बोर को बंद कर देते हैं, तो उस ऑयल वेल का ऑपरेशन 45 दिन के लिए बंद करना पड़ता है, तो मैकेनिकली स्क्रैप इट ऑफ। ऑयल जैपर इज द सक्सेस स्टोरी जिसने ये इंश्योर किया कि दोज माइक्रोब्स, उनका कंसोर्टिया बनाया, दोज माइक्रोब्स व्हिच आर एबल टू डाइजेस्ट पेट्रोलियम वैक्स, दे मेड अ बायोफिल्म, दे पुट इट इन दैट ऑयल वेल बोर पाइप एंड जैसे जैसे जो है वो वैक्स ऊपर बनता था, these microbes used to consume it and the oil well functioned regularly without a break for a period of more than 45 days. Hence this was a novel innovation. इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टेक्नोलॉजी को एक अमेरिकन जूइश कंपनी ने खरीदा था एंड 2010 में दे बॉट इट, this oil zapper. टेक ट्रांसफर उसका हुआ था $3,000 में, $3,000 million में at that point of time. Okay, $3,000 million. This is recorded. As Indians, हम लोगों के पैरों तले जमीन तक खिसकी जब शाम को in the conference it was announced that yes, this is such a technology. If these people, Tata Energy, they had asked for 10,000, we would have given that also. But we were not able to assess कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने वर्थ की है। हमने तो सिंपल कैलकुलेशन को लगाया था कि इवेंचुअल ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो 1 करोड़ का था फॉर सच ए प्रोजेक्ट, इतना आ रहा है। इससे पहले की जो है दिस जेंटलमैन डजंट फिजल आउट द डील, इट इज बेटर कि हम उसको पकड़ लें। हम लोग कूद गए एंड वी पेड द प्राइस, बट द लर्निंग वाज दैट फॉर फ्यूचर पीपल बिकेम स्मार्टर, द टाटा ग्रुप बिकेम स्मार्टर कि पेटेंट का जो वैल्यूएशन है दैट इज द की पैरामीटर, उस स्टेज पे उन्होंने वैल्यूएशन नहीं कराया था, सो दे पेड द प्राइस। इंसिडेंटली मेरा कंट्रीब्यूशन इस स्टोरी में टेक ट्रांसफर डील नेगोशिएशन करने में नहीं था। My contribution was that I had drafted and prosecuted this patent application. That was the time when it was a turning point for me that life exists beyond patenting. और उस दिन से फिर मेरा focus beyond patent, it went to technology transfer. Because at the end of the day, what matters is how we are able to commercialize it, and in case अगर हम commercialization नहीं कर पाते हैं, तो all our investment on patent, all our investment on research, that is gone for a 6. So oil zapper's story is for this reason. Then there is management of portfolio and creation of intellectual property assets. This is for our organizations to act, why it is necessary, how it is necessary, and the process and manner in which it should be done.
are some of the things which they form a guideline. They are available for everyone. These are the broad guidelines जो हमको अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से ट्वीक करनी पड़ती है. हमें means as a scientist, if I am an innovator, I have to do it. My governing body or my management that has to do it from that perspective. This is very crucial. Reality bites. ये क्वेश्चन हमने सबने आंसर करना है. Me, the management and the institutes and the researchers themselves. Okay? आज की डेट में जिस फील्ड में we take example of capital research only, 73% of the patented technologies, they are coming from infrastructure and facility area. That is any method or any process which is related to improvisation in the existing scenario. Nutrition, health, physiology and behavior. 27% जो patents हैं capital research में, they come in the area of genetics, management and traceability certifications. Traceability certifications out of the overall, they represent less than 2%. But they are the things or they are the tools for the future. So this is important from that point of view. Filing stats की अगर हम बात करें, cattle research technologies में 51% of the technologies globally they are coming from China. 23% पे है combined Europe. 19% पे US है and 7% पे है rest of the world. Cattle research की उसमें patented technologies में हम लोग कहाँ हैं? India. This has to be answered. No, let's not think negative कि हमारा डिब्बा गोल है. होगा. But it represents a gap. उस gap को हम कैसे bridge कर सकते हैं? How we can move ahead by contributing इस 7% के सेगमेंट में हमारा मेंशन अगर आएगा, only then we will be able to reap the benefits of it. We are doing research for so many years. I think Dr. CIRC existence में काफी टाइम से as a prominent institute. तो ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है. What it needs is a direction. It needs an approach, and at the end of the day, it needs a paradigm shift. की प्लेयर्स कौन कौन से हैं कैटल रिसर्च में? डू वी नो दैट? अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए. मैंने इसमें कॉमर्शियल प्लेयर्स लिख दिए हैं. देयर आर सम एकेडमिक प्लेयर्स आल्सो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा. बाकी आप लोग ढूंढिए. जेनेटिक इज नंबर 1, फाइनल हाइब्रिड इज नंबर 2 एंड एप्री इज एट नंबर 3. This is the slide which should act as a moral guiding principle for all of us. Baptism by fire, this is the need of the hour. How many of you know inverse funnel? Okay, how many of you know what is funnel? Funnel के बारे में कौन-कौन जानता है? केवल एक जना funnel के बारे में जानता है. How come you are biotechnologists, scientists and BTech and agriculture students? कितने लोग? 5-10. तो अगर सब जानते हैं तो बोलते क्यों नहीं है सब? Everyone knows about funnel? Yes. Who knows about inverse funnel? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उतना ट्रिकी भी नहीं है कि आंसर ना किया जा सके. If this is a funnel, you turn it around. This is inverse funnel. हम स्टेनो की तरह अगर अपना दिमाग अप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा. हम फनल जानते हैं लेकिन इनवर्स फनल नहीं जानते. What is inverse funnel hypothesis? This is the trickiest. इसमें एक्सपेक्टेशन है, इसमें आपको जो है वो लीवरेज मिल सकता है कि हाँ हमें नहीं पता. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मोनेटाइजेशन, ये चारों कंसेप्ट
आज की डेट में जो बिजनेस मॉडल रन कर रहा है, दैट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्स फनल हाइपोथेसिस। ये इनवर्स फनल है, ऊपर आप जितना ज्यादा डालते हैं, नीचे उसका जो है वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट परसेंटेज हमें मिलता है। सो इफ वी हैव टू सेल टेक्नोलॉजीज, 5 टेक्नोलॉजी अगर हमें सेल करनी है, हमारे पास 50 पेटेंट होने चाहिए। 50 पेटेंट हमारे पास कब होंगे? जब हम 500 फील्ड में रिसर्च करेंगे। This is the crudest form of example. Ask this question to yourself as a student. Ask this question to yourself जब आप चेयर पर बैठे हो और कहीं पे जो है वो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन हेड कर रहा है, उससे ऊपर गवर्नमेंट में जब पहुंचे तब ये सवाल पूछिएगा, एंड यू विल गेट द आंसर कि किस डायरेक्शन में हमें एक कंट्रीब्यूशन पे करना चाहिए, सो दैट द कंट्री इज लेड ऑन द राइट वे। Academics gives 3.4% of GDP is the investment on research and development which is made as on 2023 by rest of the world, that is advanced countries. इसमें यूएस भी आता है, यूरोप भी आता है। India is at measly 0.7%. Okay? तो वो gap, that is why that gap is there. Successful patent monetization world में the rate that is 2% only. Now you can understand कि अगर 2% है successful commercialization rate, तो inverse funnel hypothesis में आप अपनी बास्केट में, अपने बुके में, आईपी बुके में जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्किंग टेक्नोलॉजीज रखेंगे, that will increase this probability. Last but not least, the Brahmas for the moment is, patent is not an end, it is a means to an end. Patent का objective ये नहीं है that I get a certificate, today I am associate professor, मैं ऐसे 4-5 इकट्ठा करता हूँ, मेरे कैबिन में पीछे लगे रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रोफेसर हेड बन जाता हूं, डीन बन जाता हूं, वाइस चांसलर बन जाता हूं। नो, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग हंग ऑन द वॉल, दोस सर्टिफिकेट्स दे शुड रीच द इंडस्ट्री, दे शुड कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। एंड माय लास्ट सबमिशन ऑफ द डे इज 20 इयर्स का टाइम हमको मिलता है पेटेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, टू जनरेट मनी और कमर्शियल बेनिफिट फॉर मी। वो 20 इयर्स का जो टाइम है टू डू दैट, दैट विल गिव मी इनफ मोनेटाइजेशन टू कैरी ऑन माय रिसर्च वर्क फर्दर विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग एजेंसी। सो अगर 20 साल के बाद वो पेटेंट मेरे को दुनिया भर के लिए फ्रीली छोड़ना भी पड़ता है, तो आई शुड नॉट थिंक इवन ट्वाइस, आई शुड बी विलिंगली हैप्पी टू लेट गो ऑफ इट। बट अगर मैं वो डे 1 से सबके लिए फ्री छोड़ दूंगा, तो आई विल नॉट एग्जिस्ट एंड आई विल अगेन बिकम अ कॉलोनाइज्ड पावर, कॉलोनाइज्ड citizen as I have been in the last 2 to 3 years. Patent gives you an opportunity to become independent, I may not say job seekers, independent job providers. So you are contributing to national economy, to employment and to all that is good for this nation. That's all for the moment. And I end this session with a simple submission. आज के key takeaways में से, इसमें से, if we are able to carry even 1% of the learning and apply it in the field, we all will be able to contribute much more and in the larger interest for this nation. Jai Hind, Jai Bharat. That's all. If there are any questions, I will be happy to answer.
आपके बाद में, पहले उस गैदरिंग के जो वो तो बहुत छोटी सी चीज है। आप वैसे क्वेश्चन पूछिए ना, वो तो मैं चलते फिरते भी बता दूंगा। ई वाला तो ट्रेडमार्क रिलेटेड था, टॉक ऑफ पेटेंट। वो पेटेंट इज अ मैन्युफैक्चर, सबसे ऊपर के स्केल पे वो है। एज स्टूडेंट आप लोग जाएंगे, अगर आप किसी का पेटेंट कॉमर्शियलाइज होता है, आई विल बी हैप्पी, यू गेट इट डन फ्रॉम एनीवेयर, बट आई विल बी हैप्पी दैट इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। दैट इज माय कंसर्न। एनीवन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब लोग यहाँ एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, हाँ। और हम सब लोग कोई ना कोई आर्टिकल या कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई फिगर लेते हैं, तो अगर हम किसी के फिगर को साइट नहीं करते हैं तो वो कॉपीराइट में आता है। तो हम किसी फिगर को अगर साइट ना करके उसमें कितना % चेंज कर दें कि वो कॉपीराइट में ना आए? दिस इज माय See, if I am resorting to this tactics, तो plagiarism तो plagiarism है, चोरी तो चोरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइज चोरी हो, इन्वेंटिव चोरी हो, इनोवेटिव चोरी हो, या सिंपल चोरी हो। What I would simply do is, I would quote those very figures. As far as possible, I will try to use the source also. Quote the source. और जहां that is what is thinking intelligently. Supposing मैं नहीं साइट कर पाया हूं, उस सोर्स को मैं क्रेडिट नहीं दे पाया हूं, what I should do when it is pointed out to me? I'll simply say the usage has been for the purpose of knowledge dissemination. I have not gained anything commercial out of it. As long as I stick to that postulate, मैं कहीं से copyright infringement नहीं कर रहा हूं, but my mind should be able to think in that direction. There is a law which says, अगर research purpose के लिए कुछ use हो रहा है, तो it will not be deemed to be an infringing act. हाँ, आप वो use करके, if you are making 100 rupees out of it, तो at least 1 rupee you should give to him. उतना होना चाहिए। हाँ, तो he should compensate to me. वो compensation कितना बनता है? ऐसा नहीं कि आपने जितना किया compensation। वो आपके और उनके बीच में है, उसी के लिए होते हैं। आप लोग कह रहे हो, आप अपनी थीसिस पे सपोर्ट करते हो, थीसिस की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, मगर उस थीसिस को जब आप थॉमस रिटर्न को या एल्सीवर को पब्लिश करने के लिए दे देंगे, तो उसमें से वो पैसे कमाएगा। आप जब आर्टिकल छापते हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि प्लेगरिज्म चेक कर लीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका प्लेगरिज्म होगा, आपने कहीं कॉपी मतलब कोई डायग्राम उसकी ली होगी, तो वो तो बेचेंगे नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई बेच रहा है ना, इसलिए मेरा हर कोई ही बेच रहा। आप जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक बार अगर वो ओपन एक्सेस है, वो भी बेच रहे हैं। आपको ये लगता है यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब फ्री नहीं है भाई। आपका टाइम और आपका इंटरनेट खा रहा है। जो आपके फोन में डाटा है, जो आप सर्च कर मेरा रहे हैं, क्वेश्चन वो ये रहा है। नहीं, वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें क्या चेंजेस किए जाए या कितना % चेंजेस। कोई एक फिगर है, सपोज कोई फिगर है, अगर आप चेंजेस कर भी रहे हैं, चेंजेस आप कर भी रहे हैं, तो उन चेंजेस का बेसिस आप उसमें इंकॉर्पोरेट करिए that this representation is my representation from the figures taken from such and such source. That credit, at least that credit he is entitled to. He or Suppose आपके पास डाटा है फिल्म प्रोडक्शन का, 2000 से लेके 2023 तक इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन कितना हुआ, 2000 में इतना, 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, ग्राफ किसी ने बनाया हुआ है, राइट? आप उसके एक्सेस को चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो तो फिगर है, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो वैली है, वो तो वैसी की वैसी ही है, तो उसमें कोई कॉपीराइट इशू है ही नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी चीजों में आपको आई थिंक वरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो वेल नोन फैक्ट्स हैं
किसी ने किसी तरह प्रोजेक्ट कर दिया, आप उसको थोड़ा सा घुमा के प्रोजेक्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? I am not saying it for the simple purpose that I am not making money out of it. It is for the it is a knowledge dissemination exercise. जिस दिन इस पर पैसा बनाने के उसमें सोचेंगे उस दिन देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ साहब कि कोई भी लेक्चर, कोई भी प्रेजेंटेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको XYZ कोई भी अपने YouTube चैनल पे डालता है without taking your consent, and that fellow is making money out of that because YouTube is giving money to the YouTube channel owner if he is having, he or she is having that number of subscribers, he will get money from that. आपके इस लेक्चर से अगर मेरे 1 लाख व्यूअर हो जाते हैं, I will get something from YouTube. तो in fact this is intellectual property. तो आपका इसमें क्या कहना है कि when we are delivering any lecture or we are giving any presentation, whether we should allow public to record it or we should stop that? Please do not use camera. Please do not record it. For what? उसमें मेरा आंसर वही होगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग की परमिशन दे भी रहे हैं तो वो इट इज फॉर व्हाट पर्पस? If it is for an academic or purpose for just knowledge dissemination, that is fine. But ultimately, that person who is recording your lecture and he is putting it on the YouTube channel and earning in pounds, then there is a copyright. या तो आई शुड गेट अ कॉपीराइट कि ये मैंने लेक्चर डिलीवर किया, ये मेरा कॉपीराइटेड डायरी एंट्री है, तो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हाँ, ये चीज अगर पेटेंट में होगी तो यस आई विल वेरी अलर्ट। कॉपीराइट ठीक है, मैंने विंडोज नहीं छोड़ा हुआ है, आप भी विंडोज नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली क्या है कि जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स, ऑल द दिस IPR attorneys or teachers or जो भी लेक्चर देने आते हैं, they should disclose something also that I am giving this lecture which is in fact is copyrighted, but from my side you are free to record it. तो थोड़ा पता लगे कि हाँ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जनरल गाइडलाइन पहले ही अनाउंस कर देंगे। नहीं, ये तो आपको अनाउंस करना पड़ेगा। I am thinking of beyond patent. ये शायद हमारे पहले वाले जो स्पीकर हैं वो ये काम कर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। I attended one conference and they hosted one that cultural program. And before starting that cultural program, who was the anchor of that program, that lady announced clearly that no one recorded because the whole program is copyrighted. Okay, तो ये सब intellectual property है। देखिए, I am thankful to those of you डॉक्टर समय के आप उन्होंने मौका दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वो इतना था कि उसमें that life beyond patents, उसमें अगर मैं 1% भी अपना एक्सपीरियंस इन लोगों के लिए एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ले डाउन कर पाऊँ, तो दैट वाज द पर्पस एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इसके बियॉन्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर। Now I request Palma sir
present a total of loss, sir. Total of loss from CAR, sir. YouTube देख रहे हैं सर? अभी आएगा सर, एक्चुअली अभी चाय पिलेंगे, उसके बाद मैं फॉर्म दे रहा हूँ और उसके बाद आपके ऊपर आएंगे आपको और आपसे बात करेंगे। वो फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए आपको भाई और हम डालते हैं